कंपटीशन जो डोमेस्टिक कंपटीशन है उनको ये कैंसिल करवा रहे हैं। पता नहीं, बच्चे ये कंफ्यूज में रहते हैं कि नेशनल हम खेल पाएंगे या नहीं। The Wrestling Federation of India has announced that the Wrestling National Championships will be held from 6th to 8th December in Bengaluru. However, the Railway Sports Promotion Board has declared that the event is not a recognized one, citing the suspension of the WFI by the Sports Ministry and the Delhi High Court. The High Court has directed the Indian Olympic Association to form an ad hoc committee to oversee the affairs of the WFI. However, the IOA has said it could not proceed with this because United World Wrestling still recognizes the WFI and has been accepting entries from it for international competitions since its elections last year. The RSPB's stance has cast a shadow of uncertainty over nearly 100 wrestlers affiliated with Indian Railways regarding their participation in the Nationals. तो उसमें नुकसान किसका है? रेसलर्स का ही हो रहा है मतलब? रेसलर का हो रहा है सर, कंपटीशन हो नहीं पा रहे इनकी लड़ाई झगड़ों की वजह से। वही नुकसान में बैठे रहेंगे, कंपटीशन मिलेगा नहीं तो बच्चे को अपनी कमी कैसा पता चलेगी कि हमें ये कमी है, हम अपनी कुश्ती को सुधारें। The Railways has historically employed several prominent wrestlers, including the currently suspended Bajrang Punia, Vinesh Phogat, and Sakshi Malik. In a surprising turn, some wrestlers are bypassing the Railways and submitting affidavits to the WFI declaring their intent to compete for their respective states. However, this route is fraught with challenges as wrestlers would require a no objection certificate from the Railways to participate, a permission that many believe is unlikely to be granted. अब हम सर्विस वाले तो यही सोचेंगे कि ये कह रहे कि रेलवे वाले कराएंगे, लेकिन हमारी सर्विस वाले ने एनओसी मिल चुकी है तो हम बेंगलोर वाला ही लड़ेंगे। NNI Sports asked if the WFI had received entries from Railways for the Nationals. WFI Chief Sanjay Singh said, "No, not yet, but the last date for sending the entries is 30th November. I can only give you all the updates after 30th November." Meanwhile, a wrestler speaking anonymously to a media agency shed light on the long-standing internal politics within the Railways. Politics has always been there in Railways. Several times we were told to switch categories if so-called star wrestlers like Bajrang or Vinesh would compete. Trials were not held in their categories. It has been going on for long, the wrestler alleged. सर कुछ नहीं, प्रैक्टिस में सर पूछते रहते हैं, बड़ों से पूछते रहते हैं, कोचेस से पूछते हैं, सर हमारा कंपटीशन कब होगा। सर भी फिर कंफ्यूज हैं कि पता नहीं भी कैसे होगा, तो अपना हार्ड वर्क ही ज्यादा करते हैं। कंपटीशन होता तो मैच ज्यादा करते हैं। और आखिरी सवाल रितिका, सॉल्यूशन क्या चाहते हैं सारे रेसलर्स? आपकी क्या सॉल्यूशन निकले कि इससे रेसलर्स के लोगों का सर वो ना हो? सॉल्यूशन यही है कि कंपटीशन होते रहे कंटिन्यू जैसे पहले होते थे, उससे हर बच्चा मोटिवेट भी हो रहा है और खुद को पता चल रहा है हमें ये कमी है, हम अगले कंपटीशन में ये पूरा करेंगे, यहाँ पे गलती ना करें। बस यही सॉल्यूशन है सर, कंपटीशन लगातार होने चाहिए बच्चों के।